So, very good evening, friends. Today we'll start with the disclosure norms. We have discussed some of the portions related to disclosure norms, and I have shared some PPTs also regarding SCRA, uh, SEBI regulations on taxation aspects, which are covered in Chapter 10, and some other PPTs also, which I got from some other group. So, that also I have shared. 9.2.3. So intimations and disclosures by social enterprises of events or information to social stock exchange. Basically, this event information also has to be given. Why? Because sometimes the NGOs or NPOs, they were booking events, they were showing expenditure, but in actuality, no such event happened. So that is why they say you upload it on the website of the social stock exchange that, okay, such and such event has taken place. But they have given an option that, okay, you can deny that such event did not happen or it was cancelled or something of that sort. So in brief, we saw it yesterday, but let us read it again. So a social enterprise whose designated securities are listed on the social stock exchange or the stock exchanges, as the case may be, shall frame a policy for determination of materiality duly approved by its board or management, as the case may be, which shall be disclosed on the social stock exchange or the stock exchanges. So they will frame a policy for determination of materiality, which will be duly approved by the board or management. And the board and management of the social enterprise shall authorize one or more of its KMPs for the purpose of determining materiality of an event or information. So if they are organizing or doing some event which in their opinion is material, and who will decide that? The board and management will authorize one of the KMPs to decide for the purpose of determining materiality of an event or information and for the purpose of making disclosure to the social stock exchange or stock exchanges. So this is something similar to the CPER's concept. Suppose a CPE study circle or a branch is organizing an event. So they upload it on the website of CPE portal. So similar to the situation here, if they are organizing an event or they are doing some activity which in their opinion is material, and for that they will be authorizing one KMP, and this authorization will be done by the board or management. Under this regulation, and the contact details of such person shall also be disclosed to the social stock exchange or stock exchanges. So details of this uh, event and details of the KMP. A social enterprise whose designated securities are listed on the social stock exchange or the stock exchanges, as the case may be, shall disclose to the social stock exchange or stock exchanges where it is registered or as listed its specified securities, as the case may be, any event that may have material impact on the planned achievement of outputs or outcomes. So, in this case, it is a it shall disclose. So it is mandatory. If your securities are listed on the social stock exchange, so social enterprise shall disclose to the social stock exchange where it is registered or is listed its specified securities. So in case of designated securities or specified securities, it is mandatory. So for some securities which they may designate or specify, it will be mandatory to upload this information regarding the event. And such event will be those who have a material impact on the planned achievement of outputs or outcomes. The disclosure referred to in sub-regulation 3 shall be made as soon as reasonably possible. So this disclosure has to be made as soon as reasonably possible, but not later than 7 days, so that in case the stock exchange wants to verify the credentials of such event having taken place, so they can verify. So it should be reasonably close to the actual happening. From the occurrence of the event and shall comprise details of the event, including the potential impact of the event and the steps taken by the social enterprise to address the same. Now, if we see 2 or 3, it says the point number 2 says the board and management shall authorize one of its KMP for the purpose of determining materiality.
of an event or information and for the purpose of making disclosure to the social stock exchange as the case may be under this regulation, and the contact details of such person shall also be disclosed to the social stock. So first of all, KMP will make a determination. KMP will see to it whether the material or information or event or information is material. First thing is this. Second is, in case of designated securities or specified securities, this disclosure is mandatory. And the disclosure referred to in sub-regulation 3 shall be made as soon as reasonably possible, but not later than 7 days or within such period as may be specified by SEBI from the occurrence of the event and shall comprise details of the event, including the potential impact of the event and the steps being taken by the social enterprise to address the same. So this has to be uploaded very quickly. The social enterprise shall provide updates on a regular basis along with relevant explanations in respect of the disclosures required in sub-regulation 3 till the time the concerned event remains material. Suppose they are doing, say, some event which is on a recurring basis, or it spans, suppose, the entire India or the entire state. Suppose they are organizing some job mela, and that job mela is in the form of a moving vehicle wherein there is a space for the employers to sit, and they are taking interviews across the state. So if this event is on a recurring basis, so in that case, these details have to be accordingly uploaded. So regular updates on a regular basis along with relevant explanations in respect of the disclosure required till the time the concerned event remains material. The social enterprise shall provide specific and adequate reply to all queries raised by the social stock exchange or the social stock exchange, as the case may be, with respect to any event or information. So they may ask information regarding the activities to be covered, the expenditure to be incurred, etc., etc. So social enterprise will provide the specific and adequate reply. Now, provided that the social stock exchange or stock exchanges, as the case may be, shall disseminate the information and clarification as soon as reasonably practical. So it is obligatory on the part of the social stock exchange also that they will disseminate the information and clarification as soon as reasonably practical. The social enterprise may suo motu confirm or deny any reported event. Suppose they reported some event and later on they come to know that, okay, such and such event did not happen. So they can suo motu deny any reported event or information to social stock exchange as the case may be. So there is a provision for withdrawal of information also. The social enterprise shall disclose on its website all such events or information which have been disclosed to the social stock exchange or exchanges as the case may be under this regulation. So the social enterprise shall disclose on its website all such events or information which have been disclosed to the social stock exchange or stock exchanges as the case may be under this regulation. Now, disclosure of annual impact report by all social enterprises. A social enterprise which is either registered with or has raised funds through a social stock exchange shall be required to submit an annual impact report. And this annual impact report, we have seen, it is something similar to a board's report. So it shall be required to submit an annual impact report to the social stock exchange or stock exchange in the format specified by SEBI from time to time. The annual impact report shall be audited by a social audit firm employing a social auditor. The social stock exchange may specify parameters in addition to those specified by SEBI, which shall be required to be disclosed by a social enterprise on an annual basis. Now, disclosure of annual impact report by all social enterprises which have registered or raised funds through social stock exchange in terms of regulation 91E of the LODR regulations include the following. So there is a reference to listing obligations and disclosure requirements. And in terms of regulation 91E of the LODR regulations. And this includes the following. So first of all,
they will provide a duly audited annual impact report to the exchange within 90 days from the end of the financial year. Now, this annual impact report, what it will contain? So, this is something similar to a board report. So, it shall capture the qualitative and quantitative aspects of the social impact generated by the entity, and where applicable, the impact that is generated by the project or solution for which the funds have been raised on social stock exchange. Now, in case an NPO is only registered without listing any security, so there could be a situation where an NPO gets itself registered, but no securities are listed. So the AIR must cover the NPO's significant activities, interventions, programs, or projects during the year, and the methodology for determination of significance must be explained. Additionally, if there is an activity, intervention, program, or project covered under a listed security, it will qualify as a significant activity, intervention, program, or project. For a social impact fund, where the underlying recipients of funds are social enterprises which have registered or raised funds using social stock exchange, they must disclose an overall annual impact report for the fund covering all investee grantee organizations where the fund is deployed. So wherever they have deployed the funds, so they will cover the details regarding all those investees or grantee organizations. The AIR should, at a minimum, cover the aspects described below. First is the strategic intent and planning. So the strategic intent and planning, what is the social or environmental challenge the organization and or the instrument is addressing? Has this changed in the last year? So along with the change in the last year, there are some specific aspects, like first is the strategic intent and planning. Then how is the organization attending to the challenge or planning to attend to the challenge? Has this changed in the last year? Who is being impacted? Target segment. Has this changed in the last year? What will be the outcome of the activities, interventions, programs, or projects? Disclosure should include positive and potential unintended negative outcomes. So the first is strategic intent and planning. Second is the approach. So what is the baseline status or situation analysis or context description at the start of the activity, intervention, program, or project, and at the end of the last reporting period? What has been the past performance trend, if relevant? What is the solution implementation plan? And the measures taken for sustainability of activity, interventions, programs, or project outcomes? Has there been any material change in your implementation model in the last 1 year? So please brief out alignment of solutions to sustainable development goals. So how your solutions are aligned to the SDGs or national priorities or state priorities or developmental priorities. How have you taken into consideration shareholders' feedback in this reporting period? In the last year, what have you seen as the biggest risks to the achievement of the desired impact? How are these being intimidated? So all these information has to be given in the annual impact report. Then impact scorecard. What are the metrics monitored and what has been the trend? Then briefly include narratives of impact. So what are the metrics monitored and what has been the trend? Then briefly include narratives of impact on target segments in the reporting period. Then beneficiary stakeholder validation through surveys and other feedback mechanisms. Then these social stock exchanges, they may specify additional parameters that may be required to be disclosed by the social enterprise in its annual impact report. So some additional parameters also may be required to be disclosed. नीलम ये एक फोन देख लेना जरा जरूरी आ रहा है कोई फोन कह दो बाद में बात कर लेंगे. So the social stock exchange may specify additional parameters that may be required to be disclosed by the social enterprise in its annual impact report. The AIR shall be audited by social auditors and the
social enterprises shall disclose the report of the social auditor along with AIR. A guidance note in respect of the above aspects is provided at Annexure 5. Annexure 5 we saw yesterday also. Then statement of utilization of funds in terms of Regulation 91F of the LODR regulations. A listed not-for-profit organization shall submit to the social stock exchange the following statement in respect of utilization of the funds raised. So we have to see that statement of realization, statement of utilization of funds has to be given by a listed not-for-profit organization. So if your securities are not listed, then the statement need not be given. Category-wise amount of money raised, category-wise amount of money utilized, balance amount remaining unutilized, and these statements shall be given till the time the issue proceeds have been fully utilized or the purpose for which they were raised has been achieved. Now, the unutilized amount shall be kept in a separate bank account and shall not be mingled with other funds. Then listed NPOs shall submit a statement of utilization of funds to the social stock exchange as mandated under Regulation 91 of the LODR regulations within 45 days from the end of the quarter. So within 45 days from the end of the quarter, they have to give this statement of utilization of funds in case of listed NPOs. And a listed, it has to be done on a quarterly basis. So within 45 days from the end of the quarter. Now, penalties as per the SEBI Act. So SEBI Act empowers SEBI to impose penalties and initiate adjudication proceedings against intermediaries who default on the following grounds, such as failure to furnish information, return, etc., or failure by any person to enter into an agreement with clients. Failing to comply with any of these will lead to penalties and adjudication proceedings. So let us see some of these penalties. What are they? So Section 15A, it talks of penalty for failure to furnish information or return. So applicable to an intermediary when they fail to furnish any document, return or report to SEBI, or who files false or incorrect or incomplete information, return, report, books or other disclosed documents. Then file any return or furnish any information, books or other documents within the time specified in the regulations, or files false or inaccurate or incomplete information. Then maintain books of account or records, fails to maintain the same. So basically, these are the documents. So in case there is a failure or in case there is incomplete information or false information, then in all these cases, the penalty shall not be less than 1 lakh rupees, but may extend to 1 lakh rupees for each day during which such a failure continues, and maximum penalty is 1 crore rupees. So minimum penalty is 1 lakh rupees, but it may extend to 1 lakh rupees per day during which such failure continues, and maximum can be 1 crore. Now, different books to be maintained as per Securities Contracts Regulation Act. So under Rule 15.1, every member of a recognized stock exchange is required to maintain and preserve the following books of accounts and documents for 5 years. So sometimes they are asking this question, that for how many period this books are to be preserved. So preservation period is here 5 years. Sorry, a register of transactions, Sauda book, then client's ledger, general and cash book, bank passbook, documents register showing full particulars of shares and securities received and delivered. Then 15.2, it requires every member of a recognized stock exchange to maintain and preserve the following documents for a period of 2 years. So there are certain documents which are to be preserved for a period of 2 years. What are the members' contract books? Showing details of all contracts entered by the member with other members of the same exchange, or counterfoils or duplicate of memos of confirmation issued to such other members, counterfoils or duplicates of contract notes issued to clients, written consent of clients in respect of contracts entered into as principal. So regarding contract notes or written consent of clients or members contract book, period of retention is 2 years. But in case of bank passbook, document register, journal, cash book, general ledger, client's ledger, register of transactions, this is period is 5 years. Annexure 4, we have already seen.
We saw yesterday, general disclosures are there. Then there are governance disclosures, governance structure, and then there are financial disclosures. So this we have covered yesterday. And then Annexure 5 also we saw yesterday. Annexure 5 was guidelines notes for all social enterprises. So there has to be strategic intent and planning, then approach and impact scorecard. Reach, depth, inclusion, beneficiary or stakeholders validation. Now, regarding this reach or depth, we can see out, outreach metrics for target segments served. Then proportion of target segments who have been reached in the reporting period. Proportion of target segments who accepted the organization. So let us briefly cover this strategic intent and planning. We'll start from here in Excel 5. So first is the strategic intent and planning. So what is the, so basically it will talk of various challenges which the organization is facing. And this is covered, this is to be covered in the annual impact report. What is the, who is being impacted, how the organization is planning to attend to all these things. Then income driven by socio demographic and or behavioral characteristics. Geography, ecosystem or geographic characteristics driven by population. So all this is to be covered in the annual impact report. Then thematic issue, gender, caste, community, etc. Second is the approach. First is the strategic intent and planning. Second is the approach. In approach, baseline, status, etc. This we have already seen. What has been your biggest achievement? Then in the last year, have you seen as the biggest risk to the achievement of desired impact? How you want to mitigate it? Basically, something in the form of a board's report. Then impact scorecard. Regarding impact scorecard, we have to see what are the metrics monitored and what has been the trend. The trend in performance shall be explained through the trend of the data across the output, outcome, and impact metrics that are established by the organization. So they will measure the output, outcome, and impact. The metrics will capture the reach of the program as well as the level of inclusiveness of impact being generated, whether direct, indirect, or extended. So this shall help evaluate the digital change that has occurred in the lives of various target stakeholders, including environment due to the solution, and the metrics monitored shall target to cover the reach, depth, and inclusion. Now, how reach will be covered? So output metrics for target segments served. So proportion of target segment who have been reached, proportion of target segments who accepted the organization solution, what part of the planned activities has been accomplished, then cumulative reach, members of the target segment served since inception, then other suitable metrics in relation to the solution, usually relate to people, institutions, or activities. For example, monthly active users of MAUs for an app or tech platform. So these can be considered as needed where the target segment is the specific geographic region. Then depth. In the depth, you will see the surveys, how many surveys you conducted. For example, 1% of the customer or at least 200 respondents or more. Has your quality of life changed? You will ask this question with response options being very much improved. So some will say very much improved. Some might say slightly improved. Some will say no change. Some may say even got slightly worse and got much worse. So you have to include the depth also, reach, depth, and then inclusion. So how it intends to improve the inclusion for its customers or recipients. So there could be various themes, like theme 1 could be net increase in income level of customers or receipts. Theme 2 could be diversity and inclusion. Theme 3 could be social equity. Then what are the highlights or achievements in the reporting period? So the organization to mention key highlights, achievements, challenges, and or disappointments faced during the reporting period. And last point here is the beneficiary or stakeholders validation.
So it is utmost necessary to capture the perspective of stakeholder for the program to draw a holistic picture of the impact or change that has been achieved by the program. So the stakeholders' voices would also help in capturing information that will help validate the impact claims. So this can establish a check and avoid overclaiming. The validation process shall answer the following questions. So first, what would have happened in the absence of this activity, intervention, program or project? How much the activity, intervention, program or project contributed to changes that are evidenced? How much unintended negative impacts happened due to the activity, intervention, program or project? Then there are some questions given. The first question is, which of the following are the components of disclosures on general aspects? So if we see the components of disclosures on general aspects, the components of disclosure on general aspects are given in 9.2.2 on page number 185. And it says, what are the components? Whether scale of operations is covered. So there are 8 points here. And what are the 8 points? Disclosure on general points. Name of the organization, location, vision, mission, organizational goals and activities. So second point is covered. Okay. Then outreach of organization, scale of operations. So scale of operations is also covered. Details of top donors or investors of organization. Details of top 5 programs. So these are the 8 points which are included in disclosure on general aspects. So if we see this list, so out of this list, scale of operations is covered and organizational goals is covered. Now the third point, where it is covered, organizational level potential risk mitigation plan. I think this is covered in governance aspect. Disclosure on governance, if we see on page number 185, then in governance aspects, right, organization level potential risks and mitigation plan. This is given in disclosure on governance aspects to Roman 6. And this remuneration policies, where it is given, this is also in disclosure on governance aspects. So they can frame questions like any of these. So third and fourth, they are covered in governance aspect, disclosure on governance aspects. Second question is, which of the following should be at least covered under annual impact report? What should be least covered? Should be at least covered. So at least this much coverage is required in annual impact report. This is the question. So this is given in on page number 187, disclosure of annual impact report. So it says that you have to give strategic intent and planning. This is the first point. Second is approach. And third is impact scorecard. Okay. So all these things are required. Tino ki tino hi chahiye. So all three, 1, 2 and 3. This will be the answer. Now under Rule 15.1, every member of a recognized stock exchange is required to maintain and preserve the books of accounts and documents for a period of, under rule number 15.1. So 15.1, it is talking of 5 years. And what is the other rule? Under 15.2, the period is 2 years. Okay? 15.2, 2 years. 15.1, 5 years. बस सिंपल है. तो दोनों चीजें आपको याद करनी है. What is the maximum penalty imposed when an intermediary files? So this is 1 crore rupees. ठीक है. तो ये 4 इसमें क्वेश्चन. अच्छा, सपोज आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट्स रखने हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के लिए पीरियड कितना है? कॉन्ट्रैक्ट नोट्स के लिए कितना पीरियड है? 2 years. यस, 2 years. ठीक है. और क्लाइंट लेजर रखना है तो उसके लिए 5 years. हाँ, ठीक है. कैश बुक के लिए, बैंक बुक के लिए, सबके लिए 5 years है. सपोज खाली कॉन्ट्रैक्ट वाला याद कर ले, उसमें 2 years, बाकी का सब 5 years ऐसा. 15 1 और 2 वाला जो है. हाँ, सिर्फ सौदा बुक अगर देखेंगे तो सौदा बुक में 5 years है.
हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वाला वर्ड आया तो 2 इयर्स, बाकी 15(1) में 5 इयर्स ऐसा। लेकिन अगर सौदा बुक आ गया तो 5 ईयर्स है। कभी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट को, सौदा को भी कॉन्ट्रैक्ट समझ ले तो 2 ना लिख दें। कॉन्ट्रैक्ट, खाली कॉन्ट्रैक्ट वर्ड ही हाँ, लिखा है, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ राइट। आगे देख लेते हैं। अब अगला आ रहा है हमारा चैप्टर 10। अच्छा, ये जो 9th चैप्टर है हमारा, अब अगला हमारा इसमें आ रहा है इसका टैक्सेशन, और फिर 11th में है हमारा ये पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ अनट्रेड ट्रेड प्रैक्टिसेस। इस सब का तो नोट्स पहले भी हमने शेयर किया हुआ। अब टैक्सेशन वाला देख लेते हैं। टैक्सेशन पर भी मैंने आपको आज कुछ मटेरियल शेयर किया है, और जो रेगुलेशंस वाला चैप्टर है, चैप्टर 11, उसका मटेरियल पहले ही शेयर हो चुका है। अब एक बार ये पूरा कवर कर लें, उसके बाद फिर हम केस स्टडीज पर चलेंगे। अब चैप्टर 10 क्या बोलता है? चैप्टर 10 बोलता है टैक्सेशन। तो आज इसको कवर कर ही लेंगे, इसमें ज्यादा है नहीं कुछ खास, इसको भी क्या छोड़ना। हम्म तो क्या बोलता है टैक्सेशन में? टैक्सेशन में बोलता है कि भाई सोशल स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड मींस फॉर सोशल एंटरप्राइजेस, दोनों तरह की एंटरप्राइज आएंगी, बोथ फॉर प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टू रेज फंड्स थ्रू ए regulated mechanism. So fundraising also ensures accountability, transparency, and periodic reporting of impact. Thus, in order to provide an impetus for such fundraising mechanisms and create a vibrant, deep, and liquid market for social investment, it will be paramount to provide certain tax incentives to investors. तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है? टैक्स इंसेंटिव्स की बात कर रहा है। अब टैक्स इंसेंटिव जो सोशल एंटरप्राइजेस के लिए हमारे दिमाग में वही बात आएगी, एटीजी, ठीक है, या सीएसआर से रिलेटेड कुछ बात आएगी। तो क्या बोलता है, क्या क्या टैक्स इंसेंटिव्स देने हैं? अगर सोशल एंटरप्राइज को देना है तो उसको एग्जम्पशन दे देंगे, अगर डोनर को देना है तो उसको इनकम टैक्स में एग्जम्पशन दे देंगे। So NPOs take a variety of legal forms such as societies, trusts and not for profit companies. ठीक है, तो जितने भी एनपीओज हैं, दे मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AB। ये कई बार सेक्शन पूछ लेते हैं कि कौन से सेक्शन में रजिस्टर होने हैं, तो सेक्शन इज 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। दोनों चीजें जरूरी हैं, आपको रजिस्टर होना भी जरूरी है अंडर सेक्शन 12AB, एंड यू टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। Upon assessment of these returns, an entity is granted tax exemption status for a particular year. अगर ये दोनों चीजें फुलफिल होती हैं तभी आपको टैक्स एग्जेम्पशन स्टेटस मिलता है। An NPO can extend tax deduction to its donors upon approval under section 80G of the income tax act. अगर 80G में एग्जेम्पशन मिला हुआ है तो डोनर्स को भी वो जो एनपीओ है वो ये टैक्स डिडक्शन एक्सटेंड कर सकती है। फंडिंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशंस मेजरली कम्स फ्रॉम 4 सोर्सेज। 4 सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला तो होता है इंडिविजुअल्स डोनेशंस, दूसरा होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, रेगुलेशन एक्ट में पैसे आते हैं बाहर से, ठीक है। तीसरे में सीएसआर ग्रांट्स, जिन कंपनीज में प्रॉफिट है वहां से पैसे आते हैं। चौथा होता है ग्रांट्स अवेल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट अपनी स्कीम चलाती है वहां से कुछ ग्रांट मिलती है। तो ये 4 मेजर सोर्सेज रहते हैं इनकी फंडिंग के। Now, both NPOs and for-profit enterprises, they need to incentivize its investors to kickstart activities on the social stock exchange. ठीक है, तो various taxation aspects applicable for social sector are discussed in the following sections. सबसे पहला तो दे दिया सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी लगता है। एसटीटी कब लगता है? The securities transaction tax is a tax levied on sale or purchase of securities other than debt securities or debt mutual funds on a stock exchange platform. ठीक है, तो ये लगता है other than debt securities या debt mutual fund पर। ठीक है, there is a tax levied on sale or purchase of securities. Every recognized stock exchange or trustee of a mutual fund or lead merchant banker in case of IPO are required to collect the STT from purchaser or seller of the securities. तो परचेज या सेल पर ये लगता है, ठीक है, and subsequently remit the same to the central government. STT is charged on any transaction other than transaction in debt securities or debt mutual fund. तो debt securities और debt mutual fund पे नहीं लगता, लेकिन बाकी जो सिक्योरिटीज है उन पर लगता है।
carried out through a social stock exchange in India and the rates of STT are as follows. ये रेट STT के ये रेट्स हैं. कई बार वो रेट पर भी सवाल आपसे पूछ लेते हैं. क्या क्या रेट है? परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स इसमें 0.1% है. ठीक है. सेल या परचेज पर पेबल है और देगा कौन? जो बायर या सेलर है जिसने भी परचेज या सेल किया. फिर परचेज एंड सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इस पर 0.025% लगता है. ठीक है. ये सेल प्राइस पर लगता है और सेलर इसका देगा. ठीक है. और तीसरा क्या है? तीसरा ये है, पहला है जो डिलीवरी बेस्ड है. तो डिलीवरी बेस्ड में जो एसटीटी लगता है वो लगता है 0.1%. इंट्राडे पर लग रहा है 0.025%. ठीक है. और इंट्राडे में जो ट्रेडिंग हो रही है परचेज और सेल, उसमें सेलर को देना पड़ता है, ये सेल प्राइस पर लगता है. और उसके बाद में सेल या रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो इस पर लगता है 0.001% और ये भी सेलर को देना होता है ऑन सेल प्राइस. ठीक है. उसके बाद में लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स. ये कैपिटल एसेट जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. सो इट इंक्लूड्स एवरी प्रॉपर्टी held by the SSC whether movable or immovable. ठीक है. कैपिटल एसेट में दोनों एसेट हो सकते हैं, मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल भी हो सकता है. इट इज बाइफर्केटेड इनटू शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स. ठीक है. So this distinction is made because the incidence of tax is higher on short-term capital gains as compared to long-term capital gains. ठीक है. तो जो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर ज्यादा रेट ऑफ टैक्स लगता है और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर कम रेट ऑफ टैक्स लगता है. The applicable holding period of securities listed on recognized stock exchange to be classified as long term and short term are as under. अगर इक्विटी ओरिएंटेड है तो क्या है, हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ्स में वो लॉन्ग टर्म हो जाएंगे. और अगर एग्जैक्टली 12 मंथ्स है या उससे कम है तो फिर वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी. लेकिन अगर आपका डेट है या डेट ओरिएंटेड फंड है तो उसमें क्या है, इफ दे आर हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ्स तो वो लॉन्ग टर्म है. लेकिन अगर एग्जैक्टली 36 मंथ्स के लिए है या लेस है तो फिर उसमें वो शॉर्ट टर्म है. ठीक है. तो इसमें इक्विटी और डेट में डिस्टिंक्शन है. ये सब हमें मालूम ही है वैसे ही. एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट इज टैक्सेबल ऑन एन एक्रूअल बेसिस. ये जो प्रॉफिट या गेन है ये टैक्सेबल है ऑन एन एक्रूअल बेसिस अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द प्रीवियस ईयर in which such transfer takes place. The mechanism for computation of capital gain for transfer of a short-term capital asset is different from the one applicable in case of long-term capital asset. In case of long-term capital asset, indexation benefit is allowed except in a few cases. So normally indexation benefit भी मिलता है. वो हमें पता है कि वो किस पर बेस होता है, वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स पर बेस होता है. ठीक है. उसके बाद में आता है टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लगता है 15% प्लस सरचार्ज एंड सेस. ठीक है. If such capital gain arises from transfer of securities being equity shares, units of equity oriented fund or units of business trust. ठीक है. And such transaction is chargeable to securities transaction tax. ठीक है. If STT is not applicable, ठीक है, जैसे मान लो अदर देन इक्विटी में आप डील कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शैल बी टैक्सेबल एट द एप्लीकेबल मार्जिनल रेट. ठीक है. अच्छा, उसके बाद में टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है कि 1 लाख की एग्जम्पशन है. इट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट ऑफ 10% प्लस सरचार्ज एंड सेस इफ सच कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बीइंग इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड. तो 1 लाख तक तो एग्जम्प्ट है. 1 लाख से ऊपर जो इतना भी होगा उसके ऊपर 10% प्लस सरचार्ज प्लस सेस है. ठीक है. एंड सच ट्रांजेक्शन इज चार्जेबल टू एसटीटी. अगर एसटीटी एप्लीकेबल नहीं है, मान लो डेट सिक्योरिटीज है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 20% प्लस सरचार्ज एंड सेस. ठीक है. However, for the specified securities, the SSC shall have an option to pay tax at the rate of 10% without claiming the benefit of indexation. तो जो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, टॉप 500 है, तो उस केस में क्या है, उसके पास ऑप्शन है या तो इंडेक्सेशन ना लो. अगर इंडेक्सेशन के बिना लेना है तो 10% ले सकते हो, या इंडेक्सेशन अगर लेना है तो इंडेक्सेशन के साथ ले लो. उसमें उस केस में क्या होगा, 20% आपको रेट लगेगा. ठीक है, विद इंडेक्सेशन, और 10% हो जाएगा विदाउट इंडेक्सेशन. ये किस किस में अवेलेबल है, ये ऑप्शन अवेलेबल है. एक तो पहला
लिस्टेड सिक्योरिटीज में अवेलेबल है अदर देन यूनिट्स, ठीक है। फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स में अवेलेबल, ठीक है। फर्दर बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज आल्सो नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज। तो अगर कोई अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है जो कि नॉन रेजिडेंट एसएससी ने ट्रांसफर की है या टैक्स, तो उस केस में टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म, टैक्स ऑन कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड विदाउट कंसिडरिंग द बेनिफिट ऑफ करेंसी ट्रांसलेशन। तो अगर ये जो कोई नॉन रेजिडेंट द्वारा सेल है, तो नॉन रेजिडेंट अगर कोई सेल कर रहा है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की, तो उस केस में क्या होगा कि इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा और ये करेंसी ट्रांसलेशन का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। क्या बोलता है ये बोलता है कि सेक्शन 80G ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अलाउज टैक्स पेयर्स टू क्लेम डिडक्शन फॉर वेरियस कंट्रीब्यूशंस मेड एज डोनेशंस, ठीक है। टैक्स डिडक्शन अंडर द एक्ट इज अवेलेबल फॉर कंट्रीब्यूशंस मेड टू द स्पेसिफाइड रिलीफ फंड्स एंड charitable institutions. So under section 80G, the amount donated is allowed to be claimed as a deduction at the time of filing the assessor's income tax return. ठीक है। और ये जो डिडक्शन है अंडर 80G, इट कैन बी क्लेम्ड बाय इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म्स, एचयूएफ, कंपनी एंड अदर टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ इनकम अर्न्ड, ठीक है। तो जितनी मर्जी इनकम हो सबको 80G का बेनिफिट मिलता है इसमें। NPOs and institutions registered under section 80G are provided with a registration number by the income tax department, ठीक है। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है 80G का अलग होता है, ठीक है, और 12AB वाला रजिस्ट्रेशन अलग होता है। 12AB में तो इनकम एग्जम्प्ट होती है, 80G में आपको डिडक्शन भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ठीक है। एंड डोनर शुड इंश्योर द रिसीट कंटेन्स दिस नंबर, ठीक है। दिस रजिस्ट्रेशन नंबर नीड्स टू बी वैलिड ऑन द डेट ऑफ ए पर्टिकुलर डोनेशन। अगर आपने कभी डोनेशन किया हो तो डोनेशन में क्या होता है कि वो ना रसीद दे देते हैं आपको, तो बहुत सारी रसीदें रहती हैं, तो रसीदों में ये लिखा रहता है कि भाई ये एग्जम्प्ट है या नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये रसीद है, ठीक है ना, तो रसीद के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है कि भाई ये एग्जम्प्ट है, इस तरह से। तो जितनी भी रसीदें रहती है सब पर नॉर्मली लिखा रहता है कि भाई ये वाली एग्जम्प्ट है। जैसे ये है, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जरूरी है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी वैलिड रहता है कि भाई उस पर लिखा भी रहता है कब तक वैलिड है ये। The registration number needs to be valid on the date of a particular donation. If the donation is made while the section 80G registration is not valid, then the donation would not be eligible for deduction, ठीक है। 80G वाला कई बार एक्सपायर हो जाता बंदे का, वो उसको रिन्यू नहीं कराते, तो उस पर फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो donations paid towards eligible trusts and charities are subject to certain conditions to qualify for tax deductions. Donations under section 80G can be broadly classified into 4 कैटेगरीज, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज है इसमें। पहली तो है 100% डिडक्शन, ठीक है। ये 100% मिलती है विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट, इसमें कोई क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है। ये कौन सी आएंगी? नॉर्मली इसमें आएंगी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल रिलीफ फंड वगैरह वगैरह। तो donations made under this category can obtain 100% tax deduction on the donated amount and are not subject to the requirement to achieve any qualification criteria. Donation to the National Defense Fund, ठीक है, नेशनल डिफेंस फंड इसके अंदर आ गया। फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आ गया, पीएम केयर फंड आ गया, नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, इस पे सवाल पूछ लेता है। ये जो नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी है, इसके ऊपर कितने % डिडक्शन मिलेगी, ऐसा पूछ लेता है। क्योंकि उनको पता है भाई प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड तो सबको पता ही होगा, है ना। लेकिन इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है भाई नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी पर क्या मिलेगा, या नेशनल ऑब्लिक स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल। तो इन दोनों को आपको खास ध्यान रखना है कि इन पर जो है आपको 100% मिलेगा, ठीक है। दूसरा है डोनेशंस विद 50% डिडक्शन। अब ये 50% है, कुछ 50% में कौन सी आ रही है? विदाउट एनी क्वालिफाइंग लिमिट। तो donations made under this category can obtain a 50% tax deduction on the donated amount. तो donations to the Prime Minister Drought Relief Fund, तो ड्रॉट रिलीफ फंड इसके अंदर आ रहा है, इंदिरा गांधी मेमोरियल फंड इसमें आ रहा है, इनके ऊपर 50% टैक्स डिडक्शन मिलेगी। आपने 10,000 डोनेट किया तो 5,000 आपकी इनकम में से लेस हो जाएगा।
उसके बाद में फिर आते हैं डोनेशंस विद 100% डिडक्शन अवेलेबल अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो कुछ डोनेशंस ऐसी होती हैं जिसमें 100% डिडक्शन तो मिलती है, लेकिन आपको मैक्सिमम लिमिट होती है। जैसे आपकी इनकम मान लीजिए 50 लाख, ठीक है, तो 50 लाख में से वो क्या करते हैं, आपकी चैप्टर 6A की डिडक्शन निकाल देते हैं एक्सेप्ट ATG वाली। ठीक है, मान लो 2 लाख की आपकी दूसरी डिडक्शन है, तो 50 लाख में से आपका 2 लाख निकाल दिया तो 48 लाख हो गया। और 48 लाख का आप 10% ही डोनेट कर सकते हो। हमारे रिलीजियस टैक्स में भी लिखा हुआ है कि भाई आपको 10% निकालना है, तो 10% का मतलब ये है कि आप 10% आप इनकम का डोनेट जरूर करें। तो वो है, ये यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अवेलेबल अप टू 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो इसमें डिडक्शन मिलेगी 100%, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी आपको, जैसे मैंने बताया 50 लाख आपकी इनकम है, 2 लाख आपका चैप्टर 6A का डिडक्शन है अदर देन ATG, 48 लाख हो गई। 48 लाख में से 4,80,000 का आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। सपोज आपने 6 लाख का डोनेशन कर दिया, तो आपकी इनकम में से 4,80,000 ही लेस होगा, मतलब ये है। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दे दिया, PM केयर फंड में दे दिया, तो पूरे का पूरा 6 लाख रुपए हो जाएगा, उसमें कोई 10% वाली लिमिट नहीं लगी। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आ रही, डोनेशंस मेड टू लोकल अथॉरिटीज और गवर्नमेंट टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड डोनेशंस टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, तो आपने लोकल अथॉरिटीज या गवर्नमेंट को दिया टू प्रमोट फैमिली प्लानिंग एंड डोनेशंस टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये दोनों आती हैं इस कैटेगरी में। तो इन सच केसेस ओनली 10% ऑफ द डोनर्स एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। उसके बाद में आती हैं 50% अवेलेबल अप टू 10% ऑफ द एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। तो पहले तो 10% निकाला जाएगा, उसके बाद में फिर 50% दिया जाएगा। तो ये बाकी जो बच जाती हैं वो सारी इसके अंदर आती हैं। ठीक है, मान लो आपने इस्कॉन को दे दिया, साईं कोई संस्थान को दे दिया, इस तरह से लोक कल्याण ट्रस्ट है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, नारायण सेवा संस्थान है, तो इन सबको जो इसको वो अपना रामकृष्ण मिशन है, ये सब 50% के अंदर आ जाते हैं, अवेलेबल अप टू 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। डोनेशन मेड टू एनी लोकल अथॉरिटी or the government to be utilized for any charitable purpose other than the purpose to promote family planning। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग वाले में तो 100% मिल जाएगा अप टू 10%, और यहाँ पर मिलेगा बाकियों में 50%। They qualified for deductions under this category. In such cases, only 10% of the donors suggested gross total income are eligible for deduction. ठीक है, IT Act 1961 further specifies that no deductions are allowed in respect of donations of any amount sum exceeding 2,000 unless such sum is paid by any mode other than cash। ठीक है, 2,000 तक कैश दे सकते हो, 2,000 से ऊपर अगर आप देते हो तो आपको चेक से, अकाउंट पे से या NEFT कराना है, अदर देन कैश ही अलाउड होगा। अगर 2,000 से ऊपर है तो 2,000 तक कैश अलाउड है। तो रिडक्शन अंडर सेक्शन 80G वंस एग्जैक्ट 2,000 का पूछ सकता है, अगर एग्जैक्ट 2,000 है तो मिल जाएगी, कैश में भी देगा तो भी मिल जाएगी। तो रिडक्शन अंडर सेक्शन 80G once claimed and allowed for any assessment year cannot be claimed again for reduction for the same or any other assessment year under any other provisions of the IT Act। ठीक है, आपने एक बार रिडक्शन क्लेम कर ली तो नेचुरली अगले साल में नहीं मिलेगी। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लेमिंग ए डिडक्शन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। So taxpayers claiming deduction under ATG must have the donation receipt to support the claim। आप ये नहीं कह सकते जी मेरी तो रसीद गुम हो गई, मैंने तो रसीद फेंक दी, मैंने क्या करनी थी। So it is mandatory to have a donation receipt issued by the NPOs or charitable organization which received the donation। और इस रिसीट पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, डेट ऑफ रिसीट एंड नंबर ऑफ रिसीट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द NPO, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डोनर, अमाउंट डोनेटेड, और दोनों में लिखा होना चाहिए वर्ड्स और फिगर्स में। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द ट्रस्ट एज गिवन बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 80G अलॉन्ग विद द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड पीरियड ऑफ वैलिडिटी। फिर पैन ऑफ डोनर एंड डोनी, दोनों का पैन, उनका तो प्रिंट ही होता है नॉर्मली, ठीक है ना, और आपका पैन वो लिख देते हैं। फिर फाइनेंशियल ईयर इन विच डोनेशन वाज रिसीव्ड एंड टाइप ऑफ डोनेशन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप डोनेशन क्लेम नहीं करना चाहते तो आप रसीद इनके बिना भी ले सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन कब है, अगर आपको डिडक्शन लेनी है डोनेशन, है ना, डॉक्यूमेंट ये आपके पास होने चाहिए। अगर आपने खाली डोनेशन ही देना है, डिडक्शन नहीं लेनी, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आगे आता है एग्जम्पशंस फॉर सोशल एंटरप्राइजेस। तो सोशल एंटरप्राइजेस व्हिच आर नॉट फॉर प्रॉफिट आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AB।
इनको 12A में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है टू एंजॉय एग्जम्पशन under various sections of the Income Tax Act. So all charitable institutions which are currently registered under section 12AA as well as new entities are required to apply for a fresh registration under section 12AB. तो जिनके पास पुराना 12AA का रजिस्ट्रेशन है उनको भी 12AB में अप्लाई करना है, जो नए हैं उनको भी अप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है, पावर्स एंड स्कोप ऑफ वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, वो सिमिलर है, ठीक है। इनिशियली temporary registration is granted to the NPO valid for a maximum period of 3 years and subsequent registration is for 5 years. तो अगर नया आप अप्लाई करते हो तो आपको प्रोविजनल मिलता है फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years और बाद में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो होगा 5 years के लिए, ठीक है। और पोस्ट रजिस्ट्रेशन इनको क्या क्या कंप्लाई करना है, एक तो दे हैव टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। दे हैव टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड और अपने बुक्स को ऑडिट कराना है। अगर इन्होंने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं की, एग्जाम्पशन गई, अगर ऑडिट नहीं कराया, एग्जाम्पशन गई उस साल की, देन स्ट्रिक्टली फॉलो द गाइडलाइंस सब्जेक्ट टू विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड। अगर ये मतलब टाइमली आपने रिटर्न फाइल नहीं की, फिर आपको कंडोनेशन की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, तब तक वो क्या करता है, डिमांड बना देता है। देन you have to strictly follow the guidelines subject to which the registration has been granted. फिर furnishing of required details as per rule 18AB of income tax rule for each financial year, and then you have to issue the certificate to the donor in form 10BE, ठीक है। ये नई रिक्वायरमेंट आई है, उसमें क्या होता है कि वो जो डोनर है ना उसके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है। The income of a not-for-profit social enterprise is exempt from tax subject to certain conditions. ये जो इनकम होती है इनकी, ये एग्जेम्प्ट होती है। The primary condition for getting income exempt is that the charitable organization should be established in accordance with the tax and its subject should fall within the definition of the term charitable purpose as per section 215 of the Income Tax Act. तो सेक्शन 215 में बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसे एजुकेशन है, मेडिकल रिलीफ है, रिलीफ टू द पुअर है, योगा है, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, इस तरह से वो उन्होंने काफी सारे इसमें दे रखे हैं। देन और फिर अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी लास्ट में दे रखे हैं। फिर सेक्शन 11 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स एन एग्जम्पशन फॉर इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एनपीओ। और एनपीओ को क्या करना होता है, 85% अप्लाई करना होता है ऑफ इट्स इनकम अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर टुवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्ट्स। In case the application is below 85, it can be accumulated for the purpose of application within the maximum period of 5 years. ठीक है, क्योंकि क्या है, मान लीजिए एक एनपीओ को इनकम हुई 10 लाख रुपए, अब उसने बिल्डिंग बनानी है, अब 10 लाख रुपए तो बिल्डिंग बनेगी नहीं, तो वो क्या करते हैं 85% ना अप्लाई करके उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं 5 साल के लिए, ठीक है। तो इफ द एप्लीकेशन इज बिलो 85% बिकॉज इनकम इज नॉट रिसीव्ड, कई बार क्योंकि ये आपको एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है, आपको चेक तो मिल गया लेकिन आपको चेक ही मिला 31 मार्च को, ठीक है ना, तो यार या फिर क्या है, और फॉर एनी अदर रीजन इट कैन आल्सो एक्यूमुलेट फॉर द एप्लीकेशंस टू बी मेड इन द ईयर इन व्हिच इट इज the income is received or in the year immediately following the year in which income is received, ठीक है। अच्छा, in case NPO exercises its option to accumulate income, it is required to file specific forms. अरे नीलम यार धीरे बोल लो। हाँ, in case NPO exercises its option to accumulate income, it is required to file specific forms on or before the due date of filing a return of income, ठीक है। तो अगर आपने 85% खर्च नहीं किया, आपको एक्यूमुलेट करना है, तो आपको ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपको स्पेसिफिक फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर सच एन एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वो बेसिकली आपको बैंक्स वगैरह में रखना पड़ता है। तो एनपीओ कैन क्लेम एक्सपेंडिचर ओनली व्हेन सम्स आर पेड एंड नॉट अदरवाइज, तो आपको एक्चुअल एक्सपेंडिचर पर ही मिलता है। आपने लाइबिलिटी क्रिएट कर ली तो नहीं मिलेगा, अभी एक्चुअल कैश बेसिस पे हो गया। So donations received with a specific direction that they shall form part of the corpus fund are exempt, ठीक है। However, such donations are required to be invested in specified investment. तो कई बार क्या होता है, जो डोनर कहता है, डोनर दो तरह से डोनेशन देता है, एक तो कुछ लिखता ही नहीं है, दूसरा कहता है भी कॉर्पस फंड के लिए दे रहा हूँ, जैसे कोई बिल्डिंग फंड के लिए दे रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो वो कॉर्पस फंड वाली है, वो पूरी एग्जाम्प्ट हो जाती है। लेकिन ये इसको भी क्योंकि कॉर्पस फंड आप मेंटेन कर रहे हो, तो आपको क्या है, इसको स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट में रखना है।
कॉर्पस फंड सीधा आपका बैलेंस शीट में चला जाता है, जो आपके वॉलंटरी डोनेशन है वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चली जाती है। Exemption provisions shall not apply in relation to any income of NPO with respect to earning of the profits and gains from business। ठीक है, जो एग्जाम्पशन प्रोविजन है वो इनकम ऑफ एनपीओ पे, और जो प्रॉफिट्स एंड गेन्स वाले प्रोविजन है वो नहीं लगते। ठीक है, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the NPO or institution and separate books of accounts are maintained by such NPO or institution in respect of such business। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि एनपीओ इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस। ठीक है, और जो इंसिडेंटल है, इंसिडेंटल भी अगर आपका है तो उस केस में भी अगर उसमें कुछ लिमिट है फिर, ठीक है ना, तो उसमें कोई लिमिट है कि भाई इतनी अगर लिमिट से एक्सीड करेगा या सर्टेन परसेंटेज से एक्सीड करेगा तभी वो माना जाएगा। और जो जैसे फर्स्ट थ्री लिम्स है, एजुकेशन है, मेडिकल रिलीफ है या रिलीफ टू द पुअर है, इस केस में तो कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता, चाहे इंसिडेंटली हो। जैसे कोई स्कूल है, मान लीजिए अगर स्कूल कोई ट्रांसपोर्ट के लिए बसें चला रहा है अपने बच्चों के लिए, तो वो बिजनेस एक्टिविटी में कवर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की अपनी कोई केमिस्ट शॉप है, तो वो भी उसके अंदर कवर नहीं होगी। इन केस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनपीओ इज दैट of the advancement of any other object of general public utility, if it involves the carrying on of any activity in the nature of trade, commerce, or business, or any activity of rendering any service in relation to any trade, commerce, or business, for assess or fees or other consideration, irrespective of the nature of use or application or retention of the income, unless such activity is undertaken in the course of actual carrying out of such advancement of any other object of general public utility, and the aggregate receipts from such activity during the previous year do not exceed 20% of the total receipts of the NPO or institution undertaking such activity or activities of that previous year। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये कहता है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट ये है और उसमें आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जो कि नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस है। ठीक है, आपने कोई धर्मशाला खोल रखी है, धर्मशाला वो आप किराए पे देते हो। ठीक है, वो धर्मशाला आपका जो है अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में आता है, उसमें आप कोई किराए से इनकम कर रहे हो। तो उस केस में क्या होगा, वो ये है कि आपका जो एग्रीगेट रिसीट्स है वो 20% से एक्सीड नहीं करना चाहिए उस एक्टिविटी से, जो ट्रेडिंग एक्टिविटी से आ रहा है। अगर ट्रेडिंग एक्टिविटी से आ रहा है तो आपको सेपरेट बुक्स फिर मेंटेन करनी पड़ेंगी, उसके लिए उसका ऑडिट भी करवाना पड़ेगा क्योंकि वो बिजनेस में काउंट हो जाएगा। So capital gains arising on the transfer of the capital assets would be exempt provided such capital gains are invested in other capital assets। तो अगर मान लीजिए कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने कोई अपनी बिल्डिंग बेच दी, ठीक है ना, तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा वो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप किसी दूसरे कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करो। ठीक है, जो एनोनिमस डोनेशन है जिसमें आइडेंटिटी ऑफ द डोनर इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि ऊपर हमने क्या पढ़ा, आपको डोनेशन एग्जेम्पशन के लिए आपको पैन नंबर, नाम, एड्रेस सब कुछ देना पड़ेगा। अगर एनोनिमस डोनेशन है, ठीक है, आइडेंटिटी डोनर की अवेलेबल नहीं है, received by the charitable NPO or institution other than a charitable NPO or institution established wholly for religious purposes shall be taxable at the flat rate of 30%। तो अगर कोई रिलीजियस पर्पस के लिए तो अलग बात है, मंदिर है, मंदिर में गुल्लक रखी हुई उसमें कोई पैसे डाल जाते हैं, वो तो सब एनोनिमस ही होता है, उस केस में नहीं। बाकी जो अदर देन और होली रिलीजियस पर्पस है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इस पर फ्लैट टैक्स रेट लग जाएगा 30%। पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि भाई अपने ही पैसे को ब्लैक को व्हाइट ना कर ले कि भाई कोई डोनेशन दे गया एनोनिमस, हमें क्या पता। भाई आपको पता होना चाहिए, अगर होली फॉर रिलीजियस पर्पज है तब तो अलाउड है, लेकिन अगर अदर देन होली रिलीजियस पर्पज है तो फिर उस केस में फ्लैट टैक्स रेट लग जाएगा 30%। ठीक है, फिर एनपीओ लूजेस एग्जम्पशन इन द फॉलोइंग केसेस। किस किस केस में एग्जम्पशन लूज हो जाती है। पहला तो ये है कि इनकम होली और पार्टली और प्रॉपर्टीज अप्लाइड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पेसिफाइड पर्संस, जो ऑथर है या फाउंडर है एनपीओ का या सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर है टू द एनपीओ 50,000 और मोर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ट्रस्टी या मैनेजर है या रिलेटिव ऑफ ट्रस्टी है। ठीक है, अगर उसके लिए कोई इनकम अप्लाई होती है, ठीक है, तो उस केस में भाई आपने इनकम अर्न की और इनकम उसको एडवांस दे दिया सपोज ट्रस्टी को, तो वो आपका बेनिफिट लूज हो जाएगा, एग्जम्पशन खत्म हो जाएगी। एनपीओ इज कन्वर्टेड इनटू एनी फॉर्म व्हिच इज नॉट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन
अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूडिंग व्हेन रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड फॉर नॉन कम्प्लायंस। आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो भी आपकी एग्जम्पशन करेगी। या एनपीओ इज मर्ज्ड विद एन एंटिटी व्हिच इज नॉट हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एंड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, आपकी एनजीओ है, वो रजिस्टर्ड है, आपने किसी दूसरी एंटिटी के साथ मर्ज कर लिया, ठीक है, ना तो ऑब्जेक्ट सिमिलर है ना वो रजिस्टर्ड है, तो भी एग्जम्पशन लूज हो जाएगी। और चौथा है इसमें, एनपीओ अपॉन डिसोल्यूशन फेल्ड टू ट्रांसफर all its assets to any other NPO or institution registered or approved under the Income Tax Act within 12 months from the end of the month in which the dissolution takes place। ठीक है, आपकी एनपीओ है, आपने डिसॉल्व कर दी, तो उसमें क्या है, आपने अपने सारे एसेट्स किसी ऐसी एनपीओ या इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर करने हैं जो कि रजिस्टर्ड है या अप्रूव्ड है, और कब तक करने हैं, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। अगर आपने 12 महीने के अंदर ये एसेट्स ट्रांसफर नहीं किए तो भी आपकी एग्जम्पशन खत्म। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु पेज द एसटीटी इन इंट्राडे? इंट्राडे में तो सैलरी देता है, ठीक है ना। और बोथ, अच्छा इसका दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं, परचेजर और सेलर दोनों किस केस में देते हैं? वो देते हैं परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ बिजनेस, एनपीओ। अगर परचेजर में परचेजर देगा, सेलर में सेल में सेलर देगा। होल्डिंग पीरियड ऑफ लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज टू बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज मोर देन 3 years, ठीक है। और इक्विटी सिक्योरिटीज में कितना है, मोर देन 1 year। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ डोनेशन पेड इन कैश, ये 2000 रुपए है, ठीक है। अगर 2000 से ऊपर है तो आपको फिर चेक कैश में नहीं जा सकती, आपको चेक वगैरह में जाएगी। इन केस ऑफ एन एनपीओ एनी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट आर एग्जेम्प्टेड प्रोवाइडेड सच कैपिटल गेन्स आर इन्वेस्टेड इन अदर कैपिटल एसेट्स। तो यहाँ पर क्या है, आपको जो कैपिटल गेन है ये पूरे का पूरा इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन अदर कैपिटल एसेट्स, ठीक है। उसके बाद आपका ये चैप्टर 11 आता है। ये जो चैप्टर 11 है इसमें हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, सेबी एक्ट है, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिटरीज एक्ट है और सेबी स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ठीक है, और सेबी प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट है। तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, इसको हम कल करेंगे और इसके लिए मैंने मटेरियल आपको ऑलरेडी शेयर किया हुआ है।